Good morning. Welcome back to my YouTube channel, Medical Classes by Dr. Srinidhi Kumar Acharya. Please don't forget to subscribe my channel and also please give your valuable comments. Since the last few classes, we are discussing about the art of infant feeding and some of the important topics also we have covered regarding mother's counseling and also what are the practical difficulties in feeding and how we have to guide the mother. Now, today onwards, we will see some of the important questions which helps to understand or refresh the topic in detail. Now, this is the question number 1. Try to answer this question. Which of the following statement is incorrect? That means which of the following statement is not correct or incorrect? Human breast milk and cow's milk contains equal amount of water. Human breast milk contains more carbohydrate as compared to the cow's milk. Human breast milk and cow's milk contain equal amount of fat. And human breast milk contains more protein as compared to cow's milk. So, which of the following is right? That means which of the following is not right, correct, incorrect? Correct. The option is not correct. Human breast milk contains more protein as compared to cow's milk. This is right? This is wrong. इसमें answer है. Okay, so human breast milk and cow's milk contains equal amount of the water. Yes, this is right. Human breast milk contains more carbohydrate. Yes, lactose is rich in human milk, where it is less in the cow's milk. That is also right. Human breast milk and cow's milk contain equal amount of the fat. Yes, this is also right, 3.5 or 3.7. But we know that cow's milk contains more protein compared to the human breast milk. Okay, so that's one of the reasons why we dilute the cow's milk. Cow's milk contains more protein as compared to human milk. So the incorrect out of the 4 is the last one. Human breast milk contains more protein as compared to cow's milk. This is wrong. Actually, cow's milk contains more protein in compared to human milk. Okay, this is the answer. So this is the answer. Answer is the last answer is wrong. Okay. Now, if you look into this particular important table, this gives so many important informations. Okay, so this is a short comparison between the breast milk and as well as cow's milk. If you take 100 ml of the breast milk and if you take 100 ml of the cow's milk, then what are the constitutions? Say calorie wise, the human breast milk gives about nearly 67 to 70 calories, whereas cow's milk 100 ml gives 67 calories. Okay, 67 calories. Then water percentage in the breast milk is 88 and in the cow's milk the water percentage is 88, same. Of course, in terms of calories there is a small mistakes. I think breast milk gives 67 to 70% of calories, whereas cow's milk gives something 76. यहाँ पे लिखने में गलती हो गया, it is not 67, 76. Yes, sir. Okay, 76, ये उल्टा हो गया लिखने वक्त. So 76 kilocalories. Now water percentage is same in both. Then protein, if you see in 100 ml, breast milk contains only about 0.9 to 1.1 grams of protein in 100 ml. 0.9 to 1.1 grams of protein. Whereas, see the difference, cow's milk contains almost all triple. 3.3 to 3.5 grams of protein will be there in 100 ml of the cow's milk, which is totally unwanted or not needed to the baby. Another important is whey protein and casein protein ratio. Now this is very important. In the breast milk, the whey proteins and casein protein, the ratio is only 70:30. 70:30. And if this ratio is more, it suggests that the good quality of easily digestible protein. Usually the whey protein means they are very easily digestible. Okay, casein is very difficult to digest. These proteins are very difficult to digest. So preferably we want less casein and more whey protein. Okay, so this is there in the breast milk. Whereas you go to the cow's milk, see it is exactly opposite. It is not 70:30, it is almost all 20:80. The whey protein is only 20% and the casein protein is 80%. Whereas in the breast milk, whey protein is 70%. 70 and the casein is only 30%. So we always want whey protein ratio should be more. Okay, then because that is easily digestible protein, this will not cause any reactions, immunological reactions, there is no allergies, etc.
quite easily digested. Now coming to the fat, if you look into the fat, there is no much difference in the fat. Okay, in the breast milk, 3.5 to 4 grams of fat will be there in 100 ml, and almost all same 3.5 ml will be there in the cow's milk. But there is one difference between the fat which is present. Amount wise they are same. Amount wise there is no much difference. 3.5, 3.7 or 3. Up to 4, in between 4. But difference is breast milk contains unsaturated fatty acid, okay, which is very very good for the brain growth. Whereas cow's milk, although content is same 3.5, but it contains saturated fatty acid. Saturated fatty acids are okay for the body growth, whereas they are not good for the, that means they are not conducive for the brain growth. Whereas unsaturated fatty acids, which is abundantly present in the breast milk, so that is good for the brain growth. Therefore, we say breast milk is always for the brain and cow's milk is always for the body. For the body growth, physical growth, cow's milk is okay if it is given after proper dilution. But breast milk may not be so good for the body growth, but it is very good for the brain growth. Okay, so this is one thing. Then about the carbohydrate, if you look into carbohydrates, breast milk contains 6.5 to 7 grams in 100 ml. But cow's milk carbohydrate is less. Okay, it is only 4.5 grams. Therefore, we always talk about fortification. Whenever you give the cow's milk, you add some amount of the sugar. Sitayutam. Okay. Riswanam panchamulabhyam sitayutam. So you have to mix the 45 with the sita. So this, if you remember this very small table, that gives a lot of information. Okay, protein, fat, then carbohydrate, then whey protein ratios, then calories, water, etc. Now come to the next part. This is also we should know. Breast milk can be stored in the room temperature for 8 hours. Okay, and in the refrigerator, breast milk being stored for 24 hours. And if you keep the breast milk in the deep freeze, this can be stored for 3 months. Okay, so this is what exactly done in case of breast milk banks. Okay, so breast milk is divided into 4 milk. We know that, isn't it? Many times we have read that. Breast milk is divided into three parts depending on the flow, the stage of the flow. That is foremilk, hindmilk and midmilk. Foremilk is always rich in carbohydrate and it is very good to decrease the thirst. जब बच्चे को thirst हो जाता है तो thirst को मिटाने के लिए वो बहुत अच्छा है, because it is rich in carbohydrate and water. Whereas midmilk is very rich in protein. This is good for the body growth. Whereas hindmilk is rich in fat. Okay, which is very good for the hunger and also for the weight gain. Now, if the mother is not feeding well, even mother is suppose a situation comes where mother is feeding well. Okay, exclusive breastfeeding she is giving. Okay, but she don't know about these concept of hind milk, mid milk and fore milk. Okay, so now question is, she is giving the breast milk which is very good for the brain, but if she is not giving according to this schedule, whether the brain growth is get affected? Any answers? But we say breast milk is best for the brain. But still, although she is giving the breast milk, and if it is not done properly, then brain growth can be affected, because if the mother is not giving the hind milk, last portion, which is rich in fat, and that fat is unsaturated fatty acids, which are very important for the growth of the brain, so that is not given to the baby. Okay, so along with the weight loss or failure to gain the weight, mother is unknowingly affecting the brain growth of the child also. Therefore, giving the proper knowledge of breastfeeding is very important for the mother. कि आप 20 मिनट तक कंटिन्यूस पिलाइए, पहले एक साइड को पूरा खाली कर दीजिए, उसके बाद दूसरा साइड में जाइए, ठीक है. सो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, सी ऑल्दो शी इज अनफॉर्चुनेटली ऑल्दो शी इज गिविंग द ब्रेस्ट मिल्क, the brain growth may not be up to the mark, because she is not at all giving the fat. The fat that is present in the breast milk is unsaturated fatty acids. They are very very good for the growth of the brain, but mother is not giving that. Okay, so this is the point. So, and this is also the important of counseling the mother. Okay, now come to this question. I think this is quite easy. Exclusive breastfeeding is recommended after 6 months. Okay,
However, the continued breastfeeding along with the complementary feeding is recommended up to. The question is, हम बोलते हैं कि exclusive breastfeeding should be given up to 6 months, but फिर भी जो है हम breastfeeding को continue कर सकते हैं आगे भी complementary food के साथ, ठीक है, बाकी food के साथ. कब तक? 9 month, 12 month, 18 month, 24 months. 24 months. Last 24 months. 24 months is your answer. Okay, 24 months means almost all 2 years. Let us see the answer. Yes, analysis, that is correct answer is 24 months. Okay, and exclusive breastfeeding is still 6 months, but continued breastfeeding can be given up to 24 months or 2 years. And that's the reason why Kashyapa very clearly says first year is Kshirapa. Exclusive breastfeeding should be given in a major part. And second stage is Kshira Annada. That is 1 year to 2 years. It is called as Kshira Annada period. ठीक है, तो क्षीर अन्नादा, क्षीर को देना है आपको 2 साल तक, 24 months तक. Therefore the stage is called as Kshirannada. Kshirada and Kshirannada. Then comes Annada. Annada में breast milk नहीं देना है. Okay, so it is so classical. Kashyapa explains the same thing about 5,000 years back, and nowadays we can recommend that up to 24 months you can extend the breast feeding along with the complementary feeding if the breast milk is coming. Okay, if the breast milk is coming, you can continue it. So this is again Kashyapa already told that Kshirada and Kshirannada. Kshirannada is spread up to 2 years. Okay, now come to this question. This question is Master, sir. Docoxa hexanoic acid. Yes. the important fatty acid present in the breast milk is docosahexaenoic acid, palmitic acid, linoleic acid, and linolenic acid. DHA. So correct answer is already given, that is DHA, docosahexaenoic acid. Hexaenoic acid, this is very important. One of the unsaturated, but जो unsaturated fat हम जो बोलते हैं, so that is basically made of this docosahexaenoic acid. ठीक है, this is very important for the brain growth again. So everybody knows this answer. ठीक है, fat portion. Okay, now come to this question. Okay. So what is your answer now? सर इसमें डी होना चाहिए स्कर्वी. Which of the following can occur in exclusive breastfeeding baby? जो बच्चा exclusive breastfeeding चल रहा है उसमें क्या हो सकता है? जॉन्डिस होगा, स्कर्वी होगा, टेटानी होगा या एक्जिमा होगा? जॉन्डिस. Any other answers? Breast milk is rich in vitamin D, you think? Breast milk is rich in vitamin C? Whether breast milk is rich in calcium? टेटानी आ गया तो कैल्शियम से रिलेटेड है वो? कैल्शियम रहता है सर इसमें. कैल्शियम रहता है. And breast milk is rich in विटामिन सी नहीं, सर भी हो सकता है. So see, jaundice can occur बोल रहा है ना. The jaundice is your answer, but I say vitamin C is rich in breast milk or not? नहीं विटामिन सी even scurvy can also occur. ठीक है, vitamin A is rich in breast milk or not? Yes, sir. Vitamin A, because eczema, skin problems can occur because of vitamin A. Okay, anyway, let us see the answer. Analysis is very clear here. The answer is jaundice. Okay, exclusive breastfeeding baby is more prone to get the jaundice. Breastfed babies will be protected against the scurvy. Breastfeeding jaundice, we know that
is possible in exclusive breastfeeding, but I think usually we will get the breastfeeding jaundice or breast milk jaundice. Okay, that is possible in those babies who are feeding the exclusive breastfeeding. Because why that jaundice occur, we know that because of some of the fat portion which is present in the breast milk itself going to block the glucuronidase transferase enzyme, which is a conjugating enzyme. Therefore, it can increase the breast milk jaundice or jaundice. But still, this breast milk jaundice do not have any complications like kernicterus. If a pathological jaundice occur where the bilirubin level is increasing more than 20 and all, definitely there is a higher risk of developing kernicterus. But breast milk jaundice, although it is going above 20, still there is no risk of developing a kernicterus like conditions. After all, it is safe, but it can do occur in exclusive breastfeeding babies. Okay, baby can develop vitamin B deficiency. Okay, if mother is also having the same problem, or sometimes if the mother is pure vegetarian, then B12 like deficiencies can occur to the baby, and baby is also having risk of developing a vitamin C deficiency. Okay, but still breastfed babies are usually protected against the scurvy. Okay, so the correct answer is jaundice. Come to the next question. So jaundice के बारे में जब बोलेंगे हम, even Ayurveda also says कफ दुष्टिस्तन्या, पित्त दुष्टिस्तन्या, है ना. So जो अष्टक क्षीर दोष में जो है, क्षीर दोष विशेष with the pitta, so that leads to presentation of jaundice. So that can be taken as pathological jaundice, or that can be taken as breast milk jaundice, or that can be taken as a breastfeeding jaundice. जो भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं. But still that concept is mentioned in Ayurveda also. Now look into this question. What is true about the cow's milk except all? Okay, so read the question carefully. The true about the cow's milk are all are true about cow's milk except one. One is wrong. Cow's milk has got 80% of whey protein and no casein. Cow's milk has got less carbohydrate than the mother's milk. Has more potassium and sodium than the infant formula milk. Cow's milk has got more protein than the breast milk. Which of the following is wrong? Because सभी इसमें सही है, एक को छोड़ के कौन सा सही है? सभी इसमें ये cow's milk has got 80% whey protein and no casein. ये पूरा उल्टा है. Casein is 80% and whey protein is 20%. Okay, this is wrong. Okay, cow's milk has got less carbohydrate than the mother's milk. Yes, this is right. Has more potassium and sodium than the infant formula milk, cow's milk. This is also right. Okay, has got more protein than the breast milk, cow's milk. Yes, this is also right. Okay, see, one more problem which occurs with the cow's milk and we need to go for dilution. क्यों करना है कि क्योंकि पोटासियम और सोडियम के अमाउंट भी जो है cow's milk में ज़्यादा है. इवन फार्मूला मिल्क से जो हम देते हैं उससे बहुत ज़्यादा है. ब्रेस्ट मिल्क में ऑफकोर्स सोडियम और पोटासियम बहुत कम है, बट जो फार्मूला मिल्क जो भी हम देते हैं तो उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटासियम रहता है. बट इफ़ यू गो फॉर द काउस मिल्क द सोडियम एंड पोटासियम अमाउंट इज मोर, बिकॉज सोडियम इफ इट इज़ मोर इट गो फॉर वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेंशन से एडिमा होगा, आपको पता है, तो बच्चे का जो है ना ऐसे चबी चीक्स आ जाएगा, बहुत सारे फैट है ना, चबी चीक्स आएगा, वेट वगैरह बच्चे का बढ़ेगा बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन. ओके, so this is quite dangerous. Therefore we always go for a dilution of the cow's milk. Cow's milk dilution इसलिए करते हैं, एक तो सोडियम पोटासियम के अमाउंट सही हो जाए, दूसरा उसमें जो प्रोटीन है उसका अमाउंट सही हो जाए जो ज़्यादा है, कैल्शियम वो भी ज़्यादा है वो भी थोड़ा डाइल्यूट हो जाए. ठीक है, इसलिए हम उसको डाइल्यूशन में जाते हैं. बट आप इस डाइल्यूशन में जाने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. जैसे आप डाइल्यूट करेंगे फैट भी डाइल्यूट हो जाएगा, आप डाइल्यूट करेंगे कार्बोहाइड्रेट भी डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, आप डाइल्यूट करेंगे मिनरल्स भी डाइल्यूट हो जाएगा.
ठीक है, तो इसके लिए ऐड करना पड़ता है हमें, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो फैट को सही करने के लिए कोई ना कोई वेजिटेबल ऑयल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और शुगर को सही करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को सही करने के लिए शुगर ऐड करना पड़ेगा काउस मिल्क को, और माइक्रो मिनरल्स या विटामिन अगर इधर उधर हो गया तो थोड़ा बहुत कोई भी विटामिन सिरप ऐड करना पड़ेगा. सो दिस makes the cow's milk almost all very near to the breast milk. Okay, so this is very important. Now this is another important question. Go for this question. The question is, mother delivered 32 weeks old baby, 33 weeks old baby. So that suggests that it's a preterm via normal vaginal delivery with no complication at the time of the birth. 33 weeks of baby है, normal vaginal delivery से हो गया, and there is no any complication during the time of the birth. What is the preferred method of feeding to this neonate? इस neonate में कौन सा feeding method preferable है? कौन सा feeding method is preferable है? This is a question. Okay, so will you go for oral gastric tube feeding? 33 weeks है. Third sir, third. Or will you go for direct breastfeeding? Or will you go for paladi feeding or katori spoon feeding? Or will you go for parenteral feeding, IV fluids वगैरह? 33 weeks है तो बहुत प्रीटर्म है, कोई डाउट नहीं है. 7th month में आया ऑलमोस्ट ऑल, बट नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी से हुआ है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है बच्चे को, है ना. एस्फिक्सिया ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट बच्चा प्रीटर्म है. द प्रिफर्ड इज अकॉर्डिंग टू यू थर्ड वन, पलाडी कटोरी. चलो देखेंगे इज इट राइट और रॉन्ग. सी हियर द आंसर इज द हिस्ट्री सजेस्ट दैट it's a preterm baby. Now the question is, what is the preferred method of feeding in the preterm babies? Now if you look into this particular table, the things are very clear. Okay, 1 minute. Yes. So in this case baby is 33 weeks old. The answer is paladi feeding or katori feeding. Your answer is right. ठीक है, कटोरी स्पून फीडिंग या पलाड़ी से आप दे सकते हो. Now there is a criteria. एक criteria बना है so that there is no much confusion during this feeding. A gestational age of the baby if it is less than 28 weeks. Okay, so अगर बच्चे का gestational age है वो less than 28 weeks है, then there will be lack of propulsive movement of the gut. gut का जो movement सही नहीं रहता, जो आगे लेके propulsive है ना, आगे प्रोग्रेस करने वाला जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है. सो शुरुआत में जो है डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ फीडिंग, ओके, बिकॉज इट विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड. दिस इज लेस देन 28 वीक्स. सो गो फॉर पेरेंटल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज व्हाट इज एडवाइज when the baby is less than 28 weeks. 28 weeks means 7th month, less than 7 month. You should not go for any paladi type of feeding or even breastfeeding. Breastfeeding is of course not possible. Or express breast milk. जो भी चीज़ है आप गट को मत डालो. GAD के थ्रू कुछ भी आप देंगे वो नहीं होगा, क्योंकि गट का मसल का मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप नहीं होगा उस टाइम पे और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इसकी वजह से. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? देन गो फॉर द IV fluids if it is less than 28 weeks. If the baby is 28 to 31 weeks, suppose if the baby is in between 28 to 31 weeks, मतलब 6 months to 7 months, okay, then what happens? There will be poor coordination, okay, of feeding reflexes, sucking, rooting and swallowing reflex. इसका coordination ठीक से बैठता नहीं है, टाइम लगता है उसको. Okay, so then if you try the breastfeed in this particular time, chance of aspiration is always there. So don't give any scope for that. So if it is between 6 to 7 months of age, okay, always prefer either the orogastric feed or nasogastric feeding. By using the NG tube, nasogastric tube, you give the expressed breast milk.
Now, if the baby is more than 32 to 34 weeks, मतलब almost all 7 months से ज़्यादा है बच्चा, preterm है, 7 months से ज़्यादा है, then again the coordination of the reflex are not up to the mark. Sucking, swallowing और rooting के बीच में जो coordination होना चाहिए, so that is not up to the mark. Of course पहले वाले से थोड़ा अच्छा है, not up to the mark. Then again here instead of tube feeding you go for कटोरी spoon feeding. ओके, कटोरी स्पून. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन खुद बच्चा ब्रेस्ट फीड करे इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है उसको, और थोड़ा बहुत है. कटोरी में आप कुछ मैंने कटोरी या पलाड़ी में आप पिलाएंगे तो वो स्वैलो कर लेगा, क्योंकि कटोरी में या पलाड़ी में आप पिलाएंगे तो इसको एक ही काम है ना कि क्या है, स्वैलोइंग करना. सकिंग करना रूटिंग का काम तो नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन की बात नहीं आता है वहाँ पे, क्योंकि उसको तो एक ही काम है, आप तो सीधा डाल रहे हो मुंह में, स्वैलो करना ही एक काम है उसको. But when you talk about breastfeeding, baby has to rooting reflex, sucking reflex, और sucking भी करना है. पहले तो रूटिंग के थ्रू ब्रेस्ट को ढूंढना भी है उसको, और उसके बाद सक भी करना है और उसको स्वालो भी करना है. 3 काम है, ठीक है. तो इसके लिए थोड़ा मैच्योर होना जरूरी है. सो इन दिस केस द बेबी इज 33 वीक्स. सो इफ इट इज 33 वीक्स और मोर देन 30 वीक्स और 34 वीक्स ऑनवर्ड्स, यू कैन ट्राई विद डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग. ट्राई विद द डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग provided if these 3 feeding reflexes are well developed. So this is one simple criteria which helps a lot to decide the feeding schedule. Less than 28 weeks, don't go for it, because गट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, गट का मूवमेंट ही नहीं है, तो आप गट में कुछ भी डालने से कोई मतलब नहीं है. सो गो फॉर पेरेंटल फीडिंग, IV फ्लूइड. ओके, 28 to 31 के बीच में है तो सकिंग, स्वैलोइंग और रूटिंग का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए एस्पिरेशन होने का चांसेस है, इसलिए ट्यूब से पिलाओ. उसके बाद 32 to 34 वीक्स है तो फिर भी रिफ्लेक्स, फीडिंग रिफ्लेक्स थोड़ा डेवलप होता है, बट अच्छे से नहीं डेवलप होता है. देयरफॉर गो फॉर कटोरी फीडिंग. एंड इफ इट इज मोर देन 34 or 33 or 34, देन बाय लुकिंग एट द फीडिंग रिफ्लेक्सेस यू कैन स्टार्ट द ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग डायरेक्टली. एंड इन दिस केस इज 33 वीक्स, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी और बाकी सब सही था. सो इसका मतलब है यू कैन ट्राई विद द डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इफ इट इज फीडिंग रिफ्लेक्सेस आर ओके. बट यहाँ पे क्या है कि 33 वीक्स दिया है, तो बेसिकली टेक्निकली जो आंसर बनता है कटोरी फीडिंग. 1-2 दिन के लिए कटोरी फीडिंग कर दो, उसके बाद बच्चा वेल टॉलरेट कर रहा है तो देन यू कैन गो फॉर breast feeding. Okay, so this is one important aspect. Now go for the another question. Which of the following is true regarding the buffalo's milk? अभी तक हमने कभी बात नहीं किया buffalo milk. बहुत बार जो है गाय का दूध मिलता नहीं है, so they will go for buffalo's milk. So which of the following is true regarding the buffalo's milk compared to the human milk? Human milk को कंपेयर किया तो buffalo's milk में क्या ट्रू है? Buffalo's milk is highly caloric and high protein. It is low caloric and low protein. High caloric and low protein. Low caloric and high fat. थोड़ा सोच के बताना इसका आंसर. यस, हाई कैलोरिक तो बहुत ज्यादा, हाई कैलोरिक हाई प्रोटीन. हाई कैलोरिक हाई प्रोटीन. ओके, 1 आंसर आ गया. दूसरा कोई आंसर है? लो कैलोरिक लो प्रोटीन तो नहीं हो सकता है. हाई कैलोरिक लो प्रोटीन हो सकता है क्या? या लो कैलोरिक हाई फैट हो सकता है क्या? जब फैट ज़्यादा है तो कैलोरी कैसे कम होगा? तो लास्ट आंसर भी डाउटफुल है. और कोई आंसर है? हाई कैलोरी हाई प्रोटीन सर, पहला ही है. ओके, देन वी विल लुक इनटू द आंसर. एनालिसिस, if you see, highest energy, high protein and high fat is present in the buffalo's milk. buffalo's milk में क्या है, फैट वगैरह ज़्यादा है तो हाई एनर्जी मिलता है, हाई प्रोटीन भी रहता है, हाई फैट भी रहता है. ओके, बट एज फार एज
वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट. वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा जो है आपका ब्रेस्ट मिल्क में है. ऑफ कोर्स 88% काउस मिल्क में भी रहता है, 88% ब्रेस्ट मिल्क में भी रहता है, ऑलमोस्ट ऑल इक्वल है. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर ब्रेस्ट मिल्क आप पिला रहे हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बाकी कोई दूसरा जो पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है. ओके, 88% वाटर है. ओके, सो हाईएस्ट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, वो भी हमें पता है. हाईएस्ट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द बफेलो मिल्क. Highest calcium and phosphorus is also present in buffalo's milk, and highest fat is also present. So answer is high caloric and high protein and actually high fat. Fat भी ज़्यादा है. Okay, fat भी ज़्यादा है. यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. That's a different issue. Okay, so it gives a high energy. It's contain high protein just like cow's milk, but it also contains high fat. But along with that, it also contains कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम तो काउस मिल्क में भी ज़्यादा है और यहाँ पे भी ज़्यादा है. फॉस्फोरस भी यहाँ पे भी ज़्यादा है, काउस मिल्क में भी ज़्यादा है. ओके, सो ऑप्शन इसमें एक्चुअली होना चाहिए हाई कैलोरिक, हाई प्रोटीन एंड हाई फैट. ओके, कम टू दिस क्वेश्चन. This is quite an interesting question. Let us see that. When mother is complaining, mother is complaining that the baby is not drinking the breast milk properly, and now she complained of pain and swelling of the breast. What is the probable condition? Mother is complaining that her baby is not drinking the breast milk properly now, since 1 or 2 days. In the meantime, she is also complaining that there will be pain and swelling of the breast also. What is the probable condition? Is it breast abscess? Is it mastitis? Is it breast engorgement? Or is it sore nipple? कंप्लेन क्या है कि बेबी इज नॉट ड्रिंकिंग. बेबी इज नॉट ड्रिंकिंग मीन्स दूध का फ्लो, मिल्क का फ्लो शायद सही से नहीं आ रहा है. एंड शी ऑल्सो कंप्लेन्स ऑफ पेन. पेन का मतलब ये पेन भी है, ठीक है. स्वेलिंग भी है, एडिमा भी है. ओके, तो 3 चीज कहाँ पे है? मिल्क का फ्लो नहीं आ रहा है, पेन है, एडिमा. इज इट एब्सेस, मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट और सोर निपल? Last class we have studied this. In the last video we have seen breast engorgement, mastitis, breast abscess और sore nipple. कौन सा है? Is it mastitis or is it breast engorgement? Fullness, पेन नहीं होता. engorged breast and full breast, उसका बीच का डिफरेंस क्या है? फुल ब्रेस्ट में पेन नहीं रहता है, हार्ड रहता है ना, बट मिल्क का फ्लो चलता रहता है. बट एंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट में जो है फ्लो नहीं रहता है, पेनफुल रहता है. चलो देखेंगे व्हाट इज द आंसर. यस, व्हाट अबाउट योर आंसर? आप लोगों का आंसर क्या है? ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट. ओके, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट. लेट अस लुक इनटू द आंसर. Yes, the answer is correct. It is breast engorgement. That is how we have to differentiate between the full breast and as well as engorged breast. If the breast abscess and mastitis also, there will be pain and swelling, है ना. ब्रेस्ट एब्सेस में भी स्वेलिंग होता है, पेन होता है. मैस्टाइटिस में भी पेन होता है, स्वेलिंग होता है. बट डिफरेंशिएट क्या हुआ यहाँ पे? ये दोनों में मैस्टाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट एब्सेस, दोनों में फीवर आएगा, बट यहाँ पे फीवर नहीं है. ओके, और वहाँ पे फीवर आएगा, देयरफॉर मदर में भी सिक और उसका काउंट्स वगैरह बढ़ा हुआ है या ESR बढ़ा हुआ है, ये वाला पिक्चर आएगा. बट यहाँ पे क्या है, मदर को पिलाने में दिक्कत है, पेन है और थोड़ा बहुत एडिमा है, फीवर नहीं है. एब्सेंस ऑफ द फीवर इटसेल्फ डिफरेंशिएट मैस्टाइटिस एंड एज वेल एज एब्सेस. सोर निपल अगर होता तो सोर निपल में क्या होता है कि स्वेलिंग नहीं होता ब्रेस्ट का, बट निपल में जो है सोर निपल है, तो इसका मतलब है कि पेन होगा. पेन एंड रेडनेस ऑफ द निपल में बी देयर, दैट टू वेरी पेन व्हेन द बेबी इज सकिंग. ओके, अदरवाइज सोर निपल इज नॉट देयर. सोर निपल इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है. So answer is breast engorgement. Why it happens? Breast engorgement क्यों होता है? We know that mother is not properly giving some position while feeding the baby. Okay, so due to improper position usually or improper sealing
baby is not able to drink the milk and milk goes on accumulating leading to engorgement. So this is one more important why the breast should be emptified completely. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि बेबी इज एबल टू ड्रिंक फॉर 15 to 20 minutes इफ द बेबी इज नॉर्मल, ओके, बट मदर इज नॉट गिविंग द प्रॉपर पोजीशन या सीलिंग ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो है 20 मिनट पीने के बाद भी बच्चे को जितना ब्रेस्ट मिल्क आना है वो तो नहीं आ पाएगा. सो जब बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो ब्रेस्ट में कलेक्ट होता जाएगा एंड इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन एंड दैट लीड्स टू ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट. ट्रीटमेंट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, हॉट फर्मेंटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, है ना, सभी हमने लास्ट वीडियो में देखा है. द करेक्ट इंपॉर्टेंट इज करेक्ट पोजिशनिंग एंड करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन गो फॉर सम ऑफ द लोकल मसाज और हॉट फर्मेंटेशन एक्सेट्रा. अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई पेन किलर भी ले सकते हैं, बट यू शुड नॉट स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग को चालू रखना है. ब्रेस्ट फीडिंग को आपने बंद किया तो वापस वहाँ पे एंगॉर्जमेंट कलेक्शन होता जाएगा, एंगॉर्जमेंट बढ़ता जाएगा. ओके, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, we come to another important question. Probably this is the last question for today. What is the absolute and relative contraindication for the breastfeeding? This is a direct question. I think you can answer this question. There are two types of contraindications are there. One is absolute contraindication and another one is relative contraindication. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस देना ही नहीं चाहिए, लाइक फ्रॉम द बेबी साइड गैलेक्टोसीमिया, लैक्टोस इंटॉलरेंस एक्सेट्रा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू, ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन लैक्टोस इज लेटर कन्वर्टेड इनटू गैलेक्टोस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो गैलेक्टोसीमिया का प्रॉब्लम है. ಕೆಳಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. गैलेक्टोसीमिया और लैक्टोस इंटॉलरेंस. From the mother side, the absolute contraindications are radiation therapy, cancer therapy and chemotherapy. Relative means looking at the condition and situation you can give it. For example, HIV to the mother, it is a relative contraindication. Tuberculosis, it is a relative. If it is tuberculosis is not active, you can give it. Okay, then only if she is taking ATT, okay. So these are the relative contraindications. Okay, so I think with this we conclude for today's session. The next class we can continue the same. Thank you very much.